Vaibhav, keep your Good afternoon. good afternoon. Turn on your video. Sir. Good afternoon. So Vaibhav, I have seen your message. I'll include your questions tomorrow, okay? And explain those. Okay, sir. Okay, so today we will complete the revision for integration. Tomorrow, as such, we will do the revision for differential equations, okay? And we will also do your questions from the differentiability chapter, right? And there was another student who had sent me one question on differential equation itself. So that also I will include. Okay, so let's get started. Grishant and Shivam, please switch on your videos. Okay, so how will we do this question? What form is it? Is this one in? सर एक्स स्क्वायर को सर पॉजिटिव करेंगे इसको पहले. हाँ, very good. So सबसे पहले we take a minus out and make it a positive x square plus 8x minus 5. -5. Now we will do the completing the square method, right? Yes, sir. So 4 माइनस करना. yeah, so we will have x square plus 8x. ठीक है ना? So इसको complete करना है तो क्या 16 ऐड करना पड़ेगा और 16 ही 16 minus करना पड़ेगा. yes, तो sir. -21 हो जाएगा ये. -5 पहले से है, right? So this will become dx by this will become x plus 4 का whole square. So I have x plus 4 sorry whole square minus 21. Okay, so 21 को हम √2 square लिखते हैं. Okay. Okay, I think there is some noise behind. Okay, now this has come in the form of 1 by a square minus, sorry. Sir, x square minus a square. Yes, sir. Okay. 1 upon so 2√21. We will get this. So here the substitution for x plus 4 as x is straightforward. There is no need to even show that part, right? So what will we get? 1 upon 2√21. 1 upon 2√21 log x plus 4 minus √21. तो x plus 4 minus √21 ऊपर आएगा और x plus 4 plus √21 नीचे आएगा. Okay, that bracket is not needed. I am just putting that. And obviously plus c. Okay, so this was an easy question. Usually up till 2 to 3 marks questions can be fairly easy. You just need to remember the standard forms. Okay. How will we approach this question?
How will we do? See, we know that the differential of sine is cos, and there is a cos square here, but cos square can be written as a sine square very easily, right? So then we will have only sine thetas in the denominator, and we will have its differential in the numerator. So substitution will be possible. So we will write this as this, and 4 plus sine square theta is all fine for us. And this will become 1. We will change cos square theta as 1 minus sine square theta. Okay, so this will become 5 minus 4 plus 4 sine square theta, right? Okay, so this we have replaced by 1 minus sine square. Okay, d theta. Now we have this, two factors, and this becomes 1 plus 4 sine square, right? D theta. So we will put sine theta is equal to t. Implies that cos theta d theta, cos theta d theta is equal to dt. Okay, so our integral will become dt by 4 plus t square and 4t square plus 1, right? Now what do we have to do? Partial fraction. Yes, so we will do the partial fractions now. So we can write it as cx plus d and 4t square plus 1, right? Now we have to Yes, sir. recombine them and then equate the coefficients. Okay, so we will get what? We will get 4at square plus 80 plus b 4bt square plus b plus 4cx plus 4d plus c. Sorry, this is t. 480 cube. I think I have made a mistake there. Yeah. So c 4 c t and plus 4d plus c t cube plus dt square, right? Now we have to take, let's take the constants first. Where are the constants? B and 4C, 4D are there. These are our constants. So B plus 4D is equal to 1. And now take the terms for A, T, and 4C. So A plus 4C is equal to 0. And the square terms, 4b plus d is equal to 0, and the cube terms, 4a plus c. 4a plus c is equal to 0. Okay. Now these are the 4 simultaneous equations that we have to solve. Okay, we'll get from these two, we get a is equal to c is equal to 0. Okay, and from here we get b is equal to minus 4. Okay, we will use this. D is equal to minus 4b. So b plus 4 minus 4b is equal to 1, which is
minus 15b is equal to 1. B is equal to minus 1 by 15 and D is equal to 4 by 15. Okay. Now we just go and put those values. So this will become minus 1 by 15, 4 plus T square, and this will be 4 by 15, 4T square plus 1. Okay. So we will take a 4 out from here also so that it will become 1 by, let me write it here, remains here, and this will be written as 2 plus T square dt, and this will be 1 by 15, 1 by T plus 1 by 2 whole. Okay. Now these are both in the form of tan inverse, right? Both of these are in the form of tan inverse, and we can solve this, right? Is this clear? Any Yes, doubt? sir. Okay. How will we approach this problem? This is a definite integral. So definite integral में सबसे पहली चीज हम सोचते हैं कि कोई या तो डायरेक्टली सॉल्वेबल हो, right? Yeah, which sounds difficult because of this x here, right? Now, since it's not directly solvable, then what can we do? सर 10x की जगह हम t 10x इक्वल्स टू t 10x को अगर t लिखेंगे तो उससे तो देखिए कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि then x will become tan inverse t. It will only get more complex. So how do we approach that? सर 10x की जगह हम अगर रूट में 1 माइनस sec स्क्वायर x लिख दें क्या लिख दे? pi minus x. What did you say? pi by 2 माइनस x तो sec में ही आ जाएगा। लेकिन हमारे पास अभी क्या, देखिए ये जो हमें क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, हमें वो देखना है सबसे पहले। इज देयर अ प्रॉपर्टी वी कैन यूज, क्योंकि डायरेक्टली सॉल्वेबल नहीं है, तो क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? सर प्रॉपर्टी 4 fx a f a minus x. सर x की जगह a minus x, ठीक है, मतलब pi minus x. yes, तो I is equal to 0 to pi, we will put pi minus x, pi minus x 10 10 pi pi minus minus x ठीक है ना, upon sec pi minus x plus 10 pi minus pi x minus x. ठीक है ना। तो अब what is 10 by minus x? 10x Minus 10x, right? yes sir तो I क्या बन गया हमारा? 0 to pi 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 minus pi x minus x minus minus 10x. ठीक है, और नीचे भी हमारा क्या हो गया? minus sec x माइनस sec x minus 10. minus 10x ओके, सो अब इसको हम लिख लेते हैं, स्प्लिट कर लेंगे यहाँ पे, राइट? तो Yes, we sir. will get pi outside, and we will get a minus also. No, minus and minus get cancelled, so we won't get a minus, we'll get a 10x by sec x plus 10x.
सर पाई कॉमन ले लिया, फिर माइनस तो एक्स कहाँ सर गया, एक्स भी तो हाँ बचेगा वो भी। हम स्प्लिट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो ओके 0 सर। बाय पाई, यहाँ पे क्या रह गया एक्स हमारा, अपॉन x 10x sec x plus 10, right? ठीक। This is same as I. यस सर। This is equal to I. So इसकी जगह I लिख देंगे और I को इस साइड ले जाएंगे तो 2I। 2i हो जाएगा। हाँ 2I is equal to पाई से 0 to पाई 10x अपॉन sec x प्लस। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं। सर sec x को t मान लो, फिर अपॉन। नहीं sec x को t मान के तो कोई फायदा नहीं होगा ना, हमें उसका डिफरेंशियल तो है नहीं ऊपर। सर 10 sec x 10x हो जाएगा तो sec x नीचे dt अपॉन में चला जाएगा तो 10x dx नहीं बचेगा। नहीं क्या हो जाएगा, देखिए sec x को लोगे तो उसका डिफरेंशियल हमें मिलना चाहिए ना, कहीं कहाँ है उसका sec differential? x सर मैं कह रहा हूँ कि sec x 10x होगा उसका डिफरेंशियल पहले। हाँ लेकिन हमारे पास तो जो है ऊपर केवल 10x है ना, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं सर इसको, इसमें we can simplify it a bit if we want, right? What we can do is 0 to pi, this is sine by cos, this is 1 by cos, and this is sine by cos, right? So this will सर become sin x by अपॉन 1 cos x। plus sin x, cos ठीक है। right? ठीक। Now what can we do? Now what can we do? sin x का cos x होता है। ठीक है ना, अभी हम हमारी कोशिश अब क्या होनी चाहिए कि किसी, क्योंकि ऊपर हमारे पास sin x है, नीचे हम अगर cos x ले आते हैं, that can be helpful for us, right? सर हाफ Yes, एंगल sir. थ्योरम लगा दें। कौन सी, नहीं हाफ एंगल थ्योरम से यहाँ हमें फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें नीचे हम क्या कर सकते हैं, इसके कॉन्जुगेट 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू गेट अ cos x नीचे। तो व्हाट विल वी गेट, sin x into 1 minus sin x, माइनस sin x अपॉन में 1 अपॉन sin और स्क्वायर नीचे x आ जाएगा माइनस 1 minus sin माइनस sin स्क्वायर square x, which will be actually cos square x cos square x dx, right? Now we can again split it out and we will get integral of sin x by cos square cos x, cos x right? dx minus minus 1 minus sin x अपॉन sin cos upon स्क्वायर। cos square minus x sin square x by cos square x, okay, which is 10 square, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। right? Now 10 square x can be written as sec square x minus 1, right? yes sir क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स का हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पता है, लेकिन sec स्क्वायर एक्स का पता है। यस सर। So we would write it, the limits are still the same. Okay, now it is all solvable. Everything is solvable in this. Okay, but remember we will get the value for 2i this way. In the end we have to divide by 2 also. एक काम कर सकते हैं इस वाले Okay, so लग गए वैभव आपके पीछे बहुत नॉइज है बेटा। ओके Okay, so now this we can
easily do, because it will become 1 by t square, but with a minus sign, because cos ka differential is minus sin x. Okay, so let's try and complete this thing. We will get a minus sign, and then this is 1 by t square का क्या इंटीग्रेशन होगा 1 by t square का? क्या होगा? -1 आएगा। किसका सर, किसका? देखिए, just look at this one. How will we solve sin x by cos square x? तो हम cos x is equal to t रखेंगे, तो माइनस साइन एक्स, माइनस sin x dx is equal to dt आ गया, तो ये बन गया -1 by t square dt, यस राइट? इसका क्या होता, और 1 by t square को हम ऐसे लिख लेते हैं t raised to power -2, so it becomes easier. So what will it be? माइनस t raised to power -1 by -1, right? So ये समझ गए ना? तो ये वाला Yes, पार्ट sir. हमारा क्या आ गया? 1 by cos x, बस इतना ही आएगा इसमें, ठीक है ना? और फिर इसके बाद हमारा क्या आएगा? इसका इंटीग्रल आएगा 10x, और इसका इंटीग्रल आएगा x. We just have to put the values. Okay, and so the values are, so I is equal to, let me put I now, because so that we don't forget, I by 2, pi by 2, यहाँ का 2 आ गया नीचे, ठीक है? अब इसमें वैल्यू रखेंगे पाई की. व्हाट इज cos पाई? cos पाई, सर 1. cos pi is -1, right? ठीक है सर. ठीक है, और 10 pi is 0 plus pi minus, we will put a 0 here, we will get a 1, and this will be 0, and this will also be 0. It doesn't matter, but I'm just writing the sign correctly, right? So we get pi square by 2 minus pi. Okay, so this is the answer. So after we come to this stage, it's just careful working. Okay, so the important part here was to come to this stage till here. Okay. Yeah. Okay, this is another pretty good question. How will we do a question like this, which involves moduluses? How do we handle modulus? Anybody? लॉग सर. नहीं, लॉग से मॉड्यूलस को कैसे हैंडल करेंगे? संदीप, वैभव, आपके वीडियो ऑफ हैं, प्लीज कीप योर वीडियो ऑन. देखिए, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, राइट? यही होता है मॉड्यूलस फंक्शन. तो उसको हम मैनेज कैसे करते हैं? हम अलजेब्राइकली इस तरह मैनेज करते हैं कि हम पहले देखते हैं कि उसकी उस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है. अगर पॉजिटिव आ रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर नेगेटिव आ रही है तो हम उसको -1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है ना? तो
इस तरह के क्वेश्चंस में जो हमारा हमेशा अप्रोच होता है, हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, हमको ये देखना है कि इसका कब क्या साइन होता है, कब ये पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और वो हमें कैसे पता चलता है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हैं, क्योंकि वहीं पे साइन चेंज होगा। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं जहां पे ये साइन चेंज कर सकता है। तो जैसे ये 1 के बाद साइन चेंज करेगी, ये वाली चीज 1 से पहले ये नेगेटिव है, 1 के बाद ये पॉजिटिव है, बाकियों पे कोई असर नहीं है। तो 1 x इज इक्वल टू 1 एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया। फिर एट x इज इक्वल टू 2 दिस थिंग विल चेंज साइन, बाकी दोनों तो साइन चेंज करेंगे नहीं, तो x इज इक्वल टू 2 भी एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया। और उसी तरह से ये लास्ट टर्म जो है x इज इक्वल टू 4 पे साइन चेंज करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, तो ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं इस पूरी चीज को fx बोलता हूं, तो fx को अब मैं कैसे लिख सकता हूं, fx इज इक्वल टू, सबसे पहली वो रेंज लिख लेते हैं हमारी, क्या मतलब रेंज का मतलब यहाँ पे एक्चुअली डोमेन है, तो कौन सा डोमेन लिख लेते हैं कि x इज लेस देन 1। ओके, अगर x लेस देन 1 है तो ये क्या होगा, x माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे हम, देखिए x जो है 1 से कम है, तो x माइनस 1 की क्या वैल्यू आएगी, x छोटा है 1 से, -1। माइनस में आएगी, नेगेटिव आएगी, यस ना, सर। छोटी चीज में से बड़ी चीज घटा रहे हैं, नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट फंक्शन यानी मॉड्यूलस फंक्शन जो है उससे हम क्या करते हैं, अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि x माइनस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स लिखेंगे। अब x माइनस 2, तो अगर x 2 से छोटा है तो क्या होगा, ये नेगेटिव ही होगा, यस सर, नेगेटिव ही होगी जब भी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और ये भी नेगेटिव ही वैल्यू है, तो ये भी हो जाएगा 4 माइनस एक्स। ओके, इसको देखते हैं हम, ये क्या आ गया, इज इक्वल टू 7 माइनस 3x, ठीक है ना। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम दूसरी इंटरवल ले लेते हैं जो है x गोज फ्रॉम 1 टू 2। ऐसे में जब x 1 और 2 के बीच में, ये तो x माइनस 1 इज पॉजिटिव ना, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये इसको Yes, x sir. माइनस 1 ही लिखेंगे। लेकिन ये टर्म अभी भी नेगेटिव है, तो इसको 2 माइनस एक्स लिखेंगे, और लास्ट टर्म तो डेफिनेटली अभी भी नेगेटिव है, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे। अब हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6 माइनस 1, 5 माइनस एक्स, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट रेंज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट रेंज है 2 से लेकर 4 तक, 4 तक। ठीक है। पहली अब ये तो हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव आ ही रहा है, Positive. कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, अब sir. ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये 2 से Yes, sir. बड़ा हो गया है, तो इसको भी x माइनस 2 ही सर ये लिखेंगे। नेगेटिव, ये अभी भी भी negative. नेगेटिव इसको है, 4 तो माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स। तो अब हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 प्लस एक्स, माइनस 1 2 प्लस एक्स, तो ठीक है। अब माइनस हमारा लास्ट इंटरवल बचा है, क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये हमारा लास्ट इंटरवल है, और इसमें सभी चीजें लेंगे पॉजिटिव हो तो गई, पॉजिटिव है। तो इसको सबको डायरेक्टली लिख लीजिए। तो ये हो गया 3x माइनस, 3x माइनस, ठीक है। तो देखिए अब हम ऐसे बिल्कुल बोल बोल के कर रहे हैं तो बहुत समय लग रहा है, हमें इतना समय लगेगा नहीं, लेकिन मेथड समझ आ गया ना आपको। तो मॉड्यूलस जब भी आएगा किसी भी Yes, चीज में और हमें उसको हैंडल करना है, तो हमें इसी तरह से उसको इंटरवल्स में ब्रेक करके करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए ये जो हमारी लिमिट तो लेकिन केवल 1 से 4 तक ही है, राइट।
तो ये वाले की तो हमें एक्चुअली कोई जरूरत है नहीं अभी, क्योंकि ये तो x लेस देन 1 से था। और जो ये लास्ट वाला है इसकी भी कोई खास जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये भी 4 से ऊपर है, हमें तो केवल 1 से 4 चाहिए। ओके और ये इक्वल है या लेस देन है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन बन रहा है हमारा, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है उससे भी। ठीक है, तो एनीवे लेट्स नॉट वरी अबाउट दोज निटी-ग्रिटीज फर्स्ट। हमें मोटा मोटा समझ लेना है कि हमें तो इसको, अब ये फंक्शन हमें अलग अलग तरह से लिखना होता है, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में। तो इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रल को अब हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम 1 to 2। 1 to 2 तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 5 माइनस एक्स। फिर वी विल ऐड द रिमेनिंग पार्ट विच इज 2 से 4 तक। ओके जिससे हमारा कंप्लीट हो गया है अब इंटरवल। और लेकिन 2 से 4 में इसकी वैल्यू 1 प्लस एक्स है, right? Now there is nothing in solving this. Okay, I will not even try and solve it now. Okay, now nothing can be easier than solving this. लेकिन इसमें जो important part था ये वाला part है, ये आपको आना चाहिए। 3 plus Understood? plus okay sir. हाँ, अब let's do the next question. Use the method of integration to find the area of the triangle ABC, coordinates of whose vertices are A 4,1, B 6,6 and 8,4. Okay, so ये हम किस तरह से करेंगे? Okay, सर ये लिमिट सही होगा सर? हाँ, तो सबसे पहले इसको स्केच करना है, राइट? तो we will take 4 somewhere here and 8,4 will be somewhere, and ये कहीं बीच में है। ओके ये हमारा ट्राइंगल है इस तरह से। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये 4 है, ये 8 है, ये 6। ओके तो अब हमें ये वाला एरिया निकालना है जो इस लाइन और इस लाइन के बीच में है, और फिर ये वाला एरिया निकालना है जो इस लाइन और इस लाइन के बीच में। लेकिन ये करने के लिए हमें सबसे पहले इन तीनों लाइंस की इक्वेशन चाहिए। सर 6,6 आएगा ना? हाँ मतलब x की वैल्यू लिखी है मैंने, बस यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6,6, यहाँ पे 4,1 और यहाँ पे 8, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें लाइंस की इक्वेशन नहीं दी गई है जो यूजुअली दी जाती है। तो अब हमें पहले सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है, राइट? तो AC की इक्वेशन लिख लेते हैं। AC की क्या इक्वेशन है? कैसे निकालेंगे AC की इक्वेशन? ठीक है, तो हम जैसे मान लीजिए लिख लेते हैं y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 4, और यहाँ पे स्लोप, स्लोप क्या है? 6 माइनस 1 बाय 6 माइनस 2, राइट? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, राइट? This is the equation of, so this is 5 by 4. Okay, so सर 6 minus 4 आएगा ना? sorry, x2 minus, सर ये जो आपने 6 minus 2 लिखा है इसमें x 6 x2 तो minus 4 6 आएगा, 6 minus 4 आएगा, you are right. That's what you are saying, right? yes sir, yes 6 minus 4 आएगा, तो ये हो गया 5 by 2. Okay, so this will be 2 by
minus minus 2. 1 into This is 5x minus 20. right. So we 5x. get y is equal to 5x x नहीं लिखा is equal to 5x minus 8. Okay, so this is our first equation. Now we have to also get the equation of BC. Okay, so BC की equation आ जाएगी y minus 4 is equal to x minus 8. And here it will be 6 minus 4 by 6 minus 8. Okay, y minus 4 is equal to 2 upon minus 2 यानी minus 1 हो गया. minus 1 आ गया. So ये हो गया 8 minus x y is equal to plus 4 y is equal to 12 minus x. Okay, and then we also need to find the equation of AB. ये आएगा y minus 1 is equal to 8 minus 1 oh 4 minus 1 4 minus 1 8 minus 4. Okay, which is 3 by 4. So which is 4 by minus 4 minus 4 3x minus 12. y is equal to 3x minus 12 plus 1. 3x minus 12 will become minus 8 11. by 4, right? Hmm? Okay, right? So now we have the equations of all of these, and to find the area we will integrate 2 times, right? सर तीनों को ही Hmm? सर इन तीनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. हाँ, तीनों को नहीं करना है हमें. वही मैं आई एम कमिंग टू द पार्ट. तो एरिया क्या बनेगा? एरिया बनेगा पहले इस वाले पार्ट का एरिया, जो लिमिट्स कहां से कहां तक है? 4 to 6 तक. ओके, area under this line minus area under this line. Okay, so that would be what is AC curve? 5x minus 18 by 2 minus AB. AB is AB 4 4 से 8 right, 3x or plus the area of from where to where now? From 6 to 8. Okay, now this BC is 12 minus x minus 3x minus 8. Okay, okay, now we just have to solve these two integrals. I mean, we can not combine the two. Okay, don't make that mistake. I have seen sometimes students make that mistake because they are with different limits. Okay, so you solve this and you solve this. Okay, they are very straightforward integrals to solve. You will get the area. Okay, in case the in this case the area will be positive, so we don't have to worry about it, but area should always be a positive number. The problem comes when this triangle goes into more than one quadrant. Okay, because if it has negative area somewhere, that part also you have to split and take the modulus of that area. Okay, because if this triangle would have gone like this,
then we would have had to split it here also. So we would have to add these areas which are negative areas. Okay.